हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आनंद एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल पर स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी और उस रिएक्शन को वर्ड में किस तरह से हम इक्वेशन के रूप में शो करते हैं से भी हमने काफ़ी हद तक सीखा था। और आज हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में सिंबॉलिकली और इसे बैलेंस करना सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक एक्टिविटी को किया था जिसमें मैग्नीशियम के रिबन को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जहाँ पे हमें पता है कि मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है, ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है और इन दोनों का जो रिएक्शन हो करके जो प्रोडक्ट हमें मिला था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। हमने ये जाना था कि जब इक्वेशन के दोनों साइड्स के एलिमेंट्स के एटम अगर इक्वल न हो तो इस तरह के इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए हमें एक रूल पता होनी चाहिए। दैट रूल इज also written here, which is the mass of any substance cannot be created or nor be destroyed. Here we can see the rule. Mass can neither be created or nor be destroyed in chemical reaction. इस रूल को ध्यान में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो इक्वेशन है और जो भी एलिमेंट रिएक्शन में यूज़ किए गए हैं उन दोनों ही साइड में एलिमेंट के जो एटम हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन की ही बात करें तो यहाँ पे हम पाते हैं एक एसिड H2SO4 जिसे आपस में रिएक्शन करवाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना। जब हम इन दोनों ही साइड इस इक्वेशन के दोनों ही साइड्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो Zn जिंक के एटम है वो 1 है और इस Zn LHS साइड में जो जिंक के एटम है वो भी 1 है। हाइड्रोजन के जो एटम है SO4 के एटम 4 हैं और इस साइड में SO4 के जो एटम है वो भी 4 है। So we can say that here in this chemical equation both sides have equal mass of the atoms of each atom. Then we can say that this equation is completely balanced. Now let us see how do we balance a skeletal chemical equation. So we have
a chemical equation which is Fe plus water. After reacting ferrous with water, then we get Fe3O4. In this equation, we can see that atom of the number of atom of ferrous Fe is 1 in the LHS side, and the number RHS side of Fe is 3. Number of atom in the LHS side of a hydrogen gas is 2, and the number of atom in the RHS side of hydrogen element is 2. So hydrogen is balanced. And number of atom of oxygen is 2, where number of atom in RHS side of oxygen is 4. So in this situation, we have firstly do firstly choose one thing, that simply select only that element whose number of atom is very low. So here we can see ferrous, we can select from both sides. So we can see that the number of atom of ferrous in the LHS side is 1. Then we will try to make a balance equation by multiplying some numbers before the element. So here we will we can see the number of element in the RHS side of this equation in Fe ferrous is 3. Then to make it balanced, we have to multiply by the element of ferrous. Then we get 3 atom of ferrous in the LHS side and 3 atom of ferrous in the RHS side. So here we can see our ferrous is balanced. Now let us move forward to the another element which is unbalanced. So we can see that our oxygen is not balanced, because in the LHS side the number of atom in oxygen is 4, but in the LHS side number of atom is 2. So we have to multiply by 4. Then we will also multiply this 4 by number of hydrogen before multiplying 4, that is 2, and after multiplying 4 it will be equal to 8. So we also need 8 atoms. We also need 8 atoms of hydrogen in the LHS side. Then we will multiply also by 4 with hydrogen atom. This also we can see in the solved balanced equation on your book. So check that.
Here we can see Venus is multiplied with 3 because the number of atoms in the LHS side is 3. So keep it balanced. They will multiply it by 3. Then we get a balanced chemical equation for ferrous. Now LHS side it has only one element. So here uh, they have multiplied by 4. Then hydrogen becomes 8, and in the LHS side it should also be 8 atoms of hydrogen. So hydrogen gas multiplied by 4, and this is the required chemical balanced equation. We have to keep some important point in our mind, that is, while writing chemical equation, it is most important that it should be retained its physical state with the element. Physical state like gaseous, liquid, gaseous, liquid, aqueous, and solid. For example, as we have known this chemical equation, we know Fe, ferrous, is a solid in state. So here some equations which are balanced in front of to understand how we balance a chemical equation with the help of number of atom.